वेलकम टू योर चैनल ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे टीआई पोर्टल के बारे में। व्हाट इज टीआई पोर्टल? टीआई पोर्टल मीन्स टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। इट इज ए सीमेंस का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे सीमेटिक मैनेजर, टीआई पोर्टल एंड PCS7। फॉर DCS के लिए PCS7 और PLC के लिए सीमेटिक मैनेजर एंड टीआई पोर्टल यूज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है। S7 300 के लिए 300 सीरीज के लिए हम स्कीमेटिक मैनेजर यूज करते हैं, और S7 400, S7 300 आल्सो, एंड S7 1200 एंड S7 1500 और ET 200 और एक भी PLC है, वो सब के लिए हम टीआई पोर्टल यूज करते हैं। ओके। S7 400 के लिए हम PCS7 DCS का सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। ओके। आज हम डिस्कशन करेंगे टीआई पोर्टल के बारे में। टीआई पोर्टल का सॉफ्टवेयर ओपनिंग कैसे होता है, कैसे सिमुलेशन होता है, ओके, कैसे सिमुलेशन होता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम हम डाल के एक डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले ओपन कीजिए टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के लिए टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ओके, सीमेंस का। After that, go to create new project. Okay, create new project. प्रोजेक्ट का नाम देना है। ओके, आप प्रोजेक्ट का नाम दीजिए सॉफ्टवेयर ओपनिंग। सॉफ्टवेयर ओपनिंग, सॉफ्टवेयर ओपनिंग। ओके, पाथ किधर है? आप इस सब जो प्रोग्रामिंग हम जो करेंगे वो सब इसको हम किधर सेव करेंगे? ओके, मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया हूँ। ओके, टीआई पोर्टल करके उसमें मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, देन क्रिएट। ओके, उसके बाद हम डिवाइस नेटवर्किंग को हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, गो टू कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। ओके, देन ऐड न्यू। हम PLC जो है, हम जो डिवाइस है उसको हम ऐड करेंगे। ओके, देन हियर गिवन कंट्रोलर्स है, HMI है, PC स्टेशन है। हम अभी कंट्रोलर को यूज करेंगे। ओके, गो टू कंट्रोलर, क्लिक कंट्रोलर, then select SIMATIC 300, go to CPU, then I am activating CPU 315 PNDP. Okay, select here, see article number, version 3.2. Okay, then add. Okay, after that this is only CPU. Okay, without DI, DO, AI, O cards. Okay, then we have to place the DI, DO card. Okay, here select 4 number. Okay, then go to right hand side, DI, DO, select DI, DO. I am selecting DI, DO 16 channel DI, DO 16 into 24 volt DC 0.5 ohms. Okay, I am selecting this one. Double click here. Okay, automatically it will place here. Okay, then go to 5 number, select 5 number, same like AI, AO. Okay, I am selecting AI, AO 4 AI 4 into 14 oblique 12 bit. Okay, double click. Okay, here automatically it is placing. Okay, then select the PLC. Okay, select the PLC, then go to save the project. Okay, save the project, then compile. This is the symbol for compile. Okay, then go to compile. Okay, if any error will occur, that time it will show in down. Okay, here compiling finish, error 0, warning 0. Okay, then after compiling, then download. Okay, download to device. Okay,
For that we have to on the PLC simulator PLC virtual PLC. Okay, here we have to write a S7 PLC simulating module. Okay, I am on simulating module. Okay, okay, this is written PLC sim TCP IP. If you are having real PLC, you have to select the TCP IP. Okay, now I have no PLC. ओके मैं सिमुलेटर यूज करके ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपनिंग एंड प्रोग्रामिंग सिमुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर MPI सिलेक्ट करूँगा. ओके, MPI PLC sim MPI, then run the PLC. Okay, see run is a green. Okay, then minimize. Okay, then go to download. ओके, ये पूरा जो हम जो अभी जो जितना भी किया है ये सब पूरा डाउनलोड होगा, PLC के अंदर डाउनलोड है. हम जितना भी ये देखिए इधर हम जितना भी जो सॉफ्टवेयर में किया है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन जो जितना है किए, वो सब PLC के अंदर अपलोड होगा. ओके, डाउनलोड कीजिए. ओके, देन स्टार्ट सर्च. ओके, then click load. Okay, scan completed, one compatible device, one accessible device found. Okay, compatible device and accessible device found. Okay, then go to load. Again load. Okay, see downloading to device completed without error. Okay, start module after downloading to device, start module. Okay, then finish. Okay, this is the opening software opening steps of TIA portal. Okay, then you have to write the program. Okay, go to programming block. Okay, here main OB block, double click on that. Okay, double click कीजिए. अभी मेरा आ गया network page 1. Okay, wrong, this one the wrong, you have to write program here. Okay, I am placing the just one push button programming, normally open button we have to on, then output is on. Okay, we have to place, then output. Okay, you have to address. Okay, percentage I 0.0, this is the input address. Okay, then this is the output. For output address same to same, percentage Q 0.0. Okay, then here tag, given tag, you have to rename. Okay, this is a switch, this is the switch. Okay, sorry, okay, okay, ball switch. Okay, same. Then after writing the program, same, go to save project, compile. Okay, no error is occur, then download. Okay, same load. Okay, downloaded, then go to online. Okay, after that we have to, this is the toggle, means monitoring on off, we have to see for programming. Okay, okay, then open the simulator. Okay, this is the I 0.0. Okay, this is the I 0.0. See, when I am push button is on, see
output is energized. Here output, this is the cube 0.0. Here output is energized. Okay. Same push button release, output is de-energized. Okay. This is the software opening of टिया पोर्टल. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका जितना भी जो प्रोग्रामिंग है एक एक करके एनओएनसी के बारे में, सिम कंपैरेटर, काउंटर, टाइमर, फंक्शनल ब्लॉक प्रोग्रामिंग, एनालॉग प्रोग्रामिंग एंड थोड़ा बड़ा वाला प्रोग्राम भी जो टैंक लेवल प्रोग्रामिंग, सब जितना भी है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू.